Today we are going to be talking about minimum spanning trees. We are going to define what a minimum spanning tree is, and we are also going to look at algorithms for minimum spanning trees. Yeah. So, you all know what a spanning tree is. Does everyone know what a spanning tree in a graph is? Did we define that? Yes, we did. Right. So, I give you an undirected graph. Right. So, what is a spanning tree in G? So, spanning tree, the term is composed of two things, tree and spanning, right. So, tree means it should be a tree. What is a tree? A tree is a connected subgraph without any cycles. Connected subgraph without cycles, that is a tree. And what does spanning mean? Spanning means that it should include all vertices. This basically means that it should include all vertices. That would be a spanning tree in the graph, right. So, for an example, if I drew a graph something like that, right, say this were my graph, then I could draw a spanning tree in this graph by, let us say, I am going to use a very, right, let us say I pick this edge in the tree, pick this, pick that, then I pick this and I pick this. How many edges do I need to pick? Is this a spanning tree? No. This vertex is not included yet. So, I could pick one of the edges instead and take this to include this. This is a spanning tree, right. So, we know that a spanning tree, if the graph has n vertices, so spanning tree has how many edges? Number of vertices minus 1 edges. Yes. Great. So, now what is a minimum spanning tree? So, a minimum spanning tree is a spanning tree of minimum weight. Sometimes I will use the term weight, sometimes I will use the term length, one and the same thing. right? तो ये वेट और लेंथ कहाँ से आ गया? तो ये यहाँ से आया कि हमें जो है जो ग्राफ है, we are not just given the graph, but we are also given a length function on the edges of the graph. Let me assume the lengths are non-negative reals, right. So, every edge has a length now, every edge has a length, right. So, think of it in the following way, these are certain cities, right, and I can either connect these two cities by a wire, or I can connect these two cities by a wire, or I can connect these two by a wire, or I can connect these. These are the possible options I have of connecting them by wires. Some options are not there. Why? पता नहीं, right? It could be some reason, बीच में पहाड़ आ रहा होगा, ऐसा कुछ होगा कारण, ठीक है? So, this is the graph. Now, to connect two particular cities, I am also told how much length of wire I need. That is my length function, right. So, suppose I told you that you read 3 here and you need 5 here and you need 2 here. What are the units? It could be anything, 1000 kilometers, meters, I do not care, right. So, this could be 1, this could be 7, this could be 4, 6, 9. I just put in some numbers arbitrarily. Yeah. So, we need to connect these cities up, which means we need to create a spanning tree, and I am not interested in any spanning tree, I am interested in a spanning tree for which the length of wire I spend is as small as possible.
So, that is what I mean by a minimum spanning tree, a spanning tree of minimum length. What is the length of the spanning tree now? Some of the length of the wires. So, sum of the lengths of the edges in the tree, right. So, let us formally define that. The length of the spanning tree equals sum of the lengths of the edges in the tree, right. So, I might now decide to pick some edges. Suppose I picked, oh, I did not give this a length, I suppose I give this a length 4. Okay, so suppose I pick this edge and 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 I pick this edge. ये तो cycle बन गया, so I cannot pick this edge. This is not a tree at all, right? So I cannot pick that edge. So let me pick something else. Let me pick this 6. ठीक है, तो मेरा ट्री क्या है? ये है. What is the length of this tree? 6 plus 4 plus 4 plus 3 plus 5, 22. Right? There might be other trees in this, other spanning trees which are smaller than 22. I am interested in finding the one which is the smallest. So independent of the root. There is no notion of a root in the case of spanning tree. When we defined spanning trees or trees in graphs, there was no notion of a root ever. We called also, we used the term free trees for that, right? There is no notion of a root. Right? Since the vertex, since all the vertices are going to be included, you know, अगर आप किसी को root बोलना चाहते हैं तो वो भी vertex include हो जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सबके समझ में आ रहा है? क्या ये सबसे छोटा ट्री है इस ग्राफ के अंदर? 3 or 5. If there are more than 2 possibilities in 2 cities, choose the path between the smallest weight to the edge. तो आप ये कह रहे हैं कि ये सबसे छोटा नहीं है. चलिए देखते हैं. Three, 4, 1, 2, 5, 9, 7, 4, 6. Right, and the edges we included were this edge, ठीक है. Now, one way you can convince yourself that this is not the smallest possible tree is by seeing that, for instance, if I were to include this edge of length 1, then what is going to happen? Will it be a tree, or if I will be have a cycle? So that's one property of a spanning tree always. अगर आपके पास कोई spanning tree है, right? ये आपका spanning tree है. Spanning tree मतलब it is a connected subgraph, which means हर एक दो vertices के बीच में एक path है already. अब अगर हम एक edge डाल देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक edge डाल दी, ठीक है, तो अब एक साइकिल बन जाएगी. क्यों? क्योंकि ये जो दो वर्टिसेस हैं इनके बीच में ऑलरेडी एक पाथ है ट्री के अंदर. सो आई कैन गो फ्रॉम, लेट्स से दिस इज वर्टेक्स u एंड दिस इज वर्टेक्स v. I can go from u to v by following the edges of the tree, and then I can take this edge that I added just now back to go to u, which means I form a cycle. If it is a cycle, it's not a tree anymore. Yeah. Now in this cycle, suppose the edges have a certain length. मान लीजिए इस edge की length 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है और इसकी 4 है. ठीक है.
Now what can I do? I can include this edge and drop the edge of length 4. Yes. Will that remain, will that continue to be a tree? If I were to drop this edge, will it remain a tree? Why? Why would it remain connected? No notion of descendant. There is no notion of a descendant. In a cycle, if you drop any edge, it remains connected. Why? That's the question. Because you always have another path. We have discussed this before, right? The point is that if there is a path which gets destroyed, then that path must be using this edge. कब ये जो है कनेक्टेड नहीं होगा? जब दो वर्टिसेस के बीच का जो पाथ था वो खत्म हो गया. इसका मतलब वो पाथ इस एज को यूज कर रहा होगा, क्योंकि हमने यही एज हटाई है एक, तो वो पाथ इस एज को जरूर यूज कर रहा होगा. और अगर वो पाथ इस एज को यूज कर रहा है, तो आई कैन नाउ क्रिएट एन ऑल्टरनेट पाथ बिटवीन दोज टू वर्टिसेस बाय इंस्टेड नाउ गोइंग लाइक दिस बिटवीन दीज टू एंड पॉइंट्स. So that means that there still is a path between those two vertices जिनके बीच में हम क्लेम कर रहे हैं कि पाथ खत्म हो गया. So ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी पाथ खत्म हुआ हो. All paths are still there, or not all paths are still there. All pairs of vertices are still connected. Maybe by different path, but they're still connected. So that's an operation we can do always. I can try and add an edge, try to add an edge into this tree, and see if as a result of that operation, so as a result of that operation, I'll clearly form a cycle, right? If from that cycle I can drop an edge of longer length than the edge I added, then I would have reduced the cost of this tree, the cost or the length or the weight. I'll use these terms interchangeably. जैसे for instance, अगर मैंने ये वाली edge ऐड करी, तो आई फॉर्म दिस साइकिल. ठीक है. नाउ आई कैन ड्रॉप एनी एज ऑफ दिस साइकिल एंड इट विल स्टिल रिमेन अ ट्री. सो विच इज द एज आई वुड लाइक टू ड्रॉप? 4. सो आई ड्रॉप दिस एज 4. ओके. एंड नाउ माई न्यू ट्री हैज लेंथ व्हाट? पहले ओरिजिनल ट्री की लेंथ 22 थी, तो 22 माइनस कितने से रिडक्शन हुआ है? 3 से. सो इस न्यू ट्री की लेंथ 22 माइनस 3 हो गई. ठीक है, क्योंकि रिडक्शन 3 यूनिट्स से हुआ है. ऐसे आई कैन रिपीट द प्रोसेस. आई कैन सी इफ देयर इज समथिंग एल्स दैट कैन बी डन. Is there something else that can be done? 2 And drop 5. So suppose I include 2. So now I form this cycle which has edges of length 3 and 5 in it. So it makes sense to drop 5. Right? And the reduction now is 3 units again. So now let me draw the tree we have, because अब यहाँ पे काफी खिचपिच हो गई है. Right? So the tree that I have at this point is this is the tree I have now. This is edge length 1, this is 3, this is 2, this is 4, this is 6. Would it make sense to include some other edge and try and repeat the process? No. Because if I include this edge which is of length 4, then this edge is the longest edge on the cycle that gets formed. Right? अगर हम ये edge को include करते हैं, मैं यहाँ draw नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर से ये messy हो जाएगा नहीं तो. अगर हम इस edge को include करते हैं, तो ये cycle बनेगी, and ये the edge I am including is the longest edge on that cycle. Doesn't make sense to include it therefore. If I include this edge, it's of length 5. The cycle formed में, this is again the longest edge on that cycle. Doesn't make sense to include it. If I include this edge 7, this is the cycle that gets formed, and it's 7 is again the longest edge on that cycle. If I include this edge 9, then there is this longer cycle that gets formed. But once again, 9 is the longest edge on the cycle. Yeah, and so it does not make sense to include 9 either. So it does not make sense to include any other edge. Yeah. And so, actually I should not say and so, the reason is that's not the reason why
So I can't claim from that this is the minimum spanning tree, but it is the minimum spanning tree, and we'll use a different argument for proving that. So this is the minimum spanning tree in this graph. Okay. So MST has length. What is the length of this? 16. Right. So this could be treated as an algorithm for computing the minimum spanning tree. How would it work? You start with some tree, then you try to include an edge, look at the cycle that's formed, see if you can drop an edge of longer length from that cycle. Right? If there is a longer edge on that cycle. If there is, then you can drop that edge, right, and therefore reduce the cost to the tree. So you can keep doing this procedure till you reduce the cost to the tree, and you stop when you can't reduce it anymore. Right? But we will not look at this algorithm, or we will not analyze this algorithm, because it will be fairly expensive in terms of running time. Okay? So we are going to look at a different algorithm for computing the minimum spanning tree, and the algorithm we are going to look at is called Kruskal's algorithm. Okay? So we are looking at Kruskal's algorithm for minimum spanning tree. So it's actually a very simple algorithm. Let me illustrate it on the same graph that we had before. So I'm going to draw this graph out. Okay. So the algorithm is the following. It says take the minimum edge in the graph. Okay. So this is an example of what's called a greedy algorithm also. You will be greedy. You are all greedy. But we will now be greedy to compute the minimum spanning tree, right? Okay. So what do you think greedy means? Huh? Try to get the largest. Huh? Go for less. That's not greedy. It's the best possible. At each step, take the best possible choice. Best possible. Make the best possible choice at each step. Not optimum. Best. Right? Without thinking of the future. That's the key thing. Right? Make the best choice available. I will not write without thinking of the future, but that's the reason why it's called greedy. You just make the best available choice at each step. Right? Now here, of course, our objective is to minimize the length of the tree. So what is the best thing to do at the first step? Take the edge with the smallest length. Right? So let's do that. We pick the edge with the smallest length. That's one. And this gets included into our minimum spanning tree. So I'm now building the minimum spanning tree edge by edge. Right? So I've included edge 1, edge of length 1. Now which is the next smallest edge? Or which is the next best choice to make? 2? 2 or 3? Dekho, when you are saying we need to connect it, you are thinking of the future. Don't do that. Think of be greedy as you can. Right? Just take the best choice. Yeah? So the next best is just go for the length 2. Right? Now what does greedy say next? Which is the next edge you will pick? 3. Right?
फोर दो एजेस हैं, फोर। पहले एक लेते हैं फिर दूसरी लेते हैं। चलिए पहले ये वाली ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो पहले ये वाली ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, उसको भी ले सकते थे पहले, पहले इसको ले लेते हैं। अब दूसरी वाली लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस दूसरी एज को लेते हैं so it will form a cycle, ठीक है। Since this forms a cycle, we are not getting what we wanted, right? It's not a tree anymore. अगर मैं ये एज इंक्लूड कर देता हूँ यहाँ पे तो ये ट्री नहीं रहेगा, राइट? तो इसलिए इसमें इस एज को नहीं इंक्लूड करूँगा, बस इतनी रियायत देते हैं, ठीक है। बाकी ग्रीडी, Greed with intelligence. हाँ, right? So you understand the only modification that I am making, if by including an edge I form a cycle, I don't include that edge, right? So I am not going to include edge 4. Sorry, edge this particular edge, which is of length 4. Which is the next edge I would like to include? 5. I try to include 5, but 5 also forms a cycle. Yeah, so I don't include 5. Which is the next edge I would like to include? 6. This edge. Right? Actually, I can stop at this point because now I have a spanning tree. Right? Any other edge that I try to include will always form a cycle. Yeah, because this is a spanning tree, and so I can stop. As you can see, this we have already argued is, we have not argued this is the best possible. Actually, there, till now we have not seen an argument for why this is the best possible. Yeah, but this is the same solution we obtained earlier. Soon we are going to argue that this is really the best possibility. Does everyone understand the algorithm? Yes? Okay, can we write down what the algorithm is? Right? So let's just quickly write down what the algorithm is, because it's very easy to write down. So Kruskal's algorithm okay, so let's say the very first step is sort edges in increasing order of length. Right, and let's say this order is E1, E2, E3, EM. Right, what does this mean? This means E1 is the edge with the smallest length. So to be more specific, L of EI, length of the edge EI, is less than the length of the edge EI plus 1, less than or equal to. Okay, that's what I mean by sorting order. Now what should be the next step? For I going from 1 to M, do. What should I do? Take the first element. Take EI to the spanning tree. So we need to define some spanning tree, right? So let's say my spanning tree is T, which is initially null, right? T is a set of edges. So what should I do now? If EI union T has a cycle or is a tree, then T is T union EI. और कुछ कहने की जरूरत है? हाँ? क्या? रिटर्न टी, आई प्लस प्लस फॉर लूप है, आई प्लस प्लस
और कुछ कहने की जरूरत है? नहीं, बहुत कुछ कहने की जरूरत है। हमने edges included should be n minus 1. You can stop there, so work done is less. you could do that maybe, yeah. पर हमने जो है ये वाली स्टेप में बहुत कुछ छुपा दिया। हाउ डू वी चेक? We can create a array and we can give it give every edge an index, and when it is greater, and we can increase, and when it is greater than 2, then we can, because edge नहीं vertex. vertex. रॉन्ग। ठीक है, ये ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ, सो हाउ डू यू चेक इफ दैट एज दैट यू आर ट्राइंग टू इंक्लूड फॉर्म्स अ साइकिल और नॉट? उसके दोनों एंड पॉइंट्स विजिटेड हैं। व्हाट डज विजिटेड मीन? Before including a vertex in the tree, no, we don't include the vertex in the tree. We are only including edges into the tree. As we include an edge in the tree, what does visited array of that edge mean? What does visited array of vertices? ये क्यों गलत है? कोई बता सकता है? सर एक ही edge से बहुत सारी वो भी हो सकते हैं। एक ही vertex से बहुत सारी edges हो सकती हैं। आपने मान लीजिए ये एक एज ली, आप कह रहे हैं एक एज लीजिए और उसके दोनों एंड पॉइंट्स को विजिटेड मार्क कर दीजिए। बहुत बढ़िया, इनको हमने विजिटेड मार्क कर दिया, विजिटेड जो भी हुए उनको क्रॉस कर दिया। ठीक है, फिर एक और एज ली, इसके दोनों एंड पॉइंट्स को क्रॉस मार्क कर दिया। आ गया, चमक गया। ठीक है, अब आपने ये एज ली, आपने कहा इसके तो दोनों एंड पॉइंट्स विजिटेड हैं, इसको हम बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये गलत है इसमें। So we can do that. We can take both the vertices, the endpoints of that edge, and we can go for DFS or BFS. DFS or BFS on what? When you are giving On the when tree. you're marking it visited, you mark it with component in which it is there. Like suppose whenever you find an edge, if one of its vertices is already visited and the other is not, then the vertex that has not been visited, you mark it in that particular component in which that edge is. Okay, we'll have to develop this later. ठीक है, we will see how to do it, and the important thing is also to do it efficiently, right? तो ये हमें करना पड़ेगा, इसमें हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो एक तो ये काम रहता है कि कैसे हम इस स्टेप को इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज दैट विल डिक्टेट द रनिंग टाइम ऑफ दिस प्रोसेस, राइट? बिकॉज एक्सेप्ट फॉर दिस स्टेप देयर इज नथिंग एल्स इन दिस एल्गोरिथम। ये आप एजेस को सॉर्ट कर सकते हैं। हाउ मच टाइम विल दैट टेक? m log n। और फिर बाकी तो ये एक फॉर लूप है, बस यही है सारा जहाँ काम हो रहा है, राइट? सो दिस विल, इफ दिस स्टेप टेक्स लेस देन m log m टाइम over all iterations put together, then this will be an order m log m algorithm. ठीक है, so we have to somehow achieve that, but we'll come to that point later. Before that, we have to argue why this is the minimum spanning tree. ये तो आपने सोचा ही नहीं अभी तक। ठीक है, मैंने कहा, आपने मान लिया कि ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री। क्यों है मिनिमम स्पैनिंग ट्री? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कोई और ट्री इससे छोटा हो? But that means all you're saying is that you cannot greedily improve the tree. Maybe, but there is some other sequence of आपने जो है बहुत सारी और एजेस डाली होती हैं जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी एजेस हट जाती, कुछ ऐसे होता है। It may be possible that if you take each cycle and Each? we may prove that MST with a minimum spanning tree must have the property that if we include any edge, the longest edge will not be included in any cycle. The longest edge will not be included in the MS tree. Then we may prove that this may be unique. This kind of tree is unique. Okay. No, we are not always taking the minimum, right? We are not always taking the minimum because we are at some times when the minimum forms a cycle, we throw that minimum away. So it forms a cycle and the other edges are smaller than that. Right. So So we are doing it. We are doing the larger. In every cycle we are discarding the largest. We are discarding it because it forms a cycle and other edges are smaller. okay, so we need to formalize this intuition. Right? This is all I'll say is this is not a proof, but this is an intuition for the proof. Right? Let's see what a proof looks like.
ठीक है. So now what we are going to do, this is, look at this carefully because this is how you will have to write your proofs in the exams. I am going to look at the edges of Kruskal's algorithm, the edges picked by Kruskal's algorithm. So Kruskal's algorithm picks a certain set of edges, right? Let's give those edges names, right? Let's call them G1. G1 is, let's say, the first edge that Kruskal's algorithm picks, right? So clearly it is the edge of the, so let's say G1, G2, G3. How many edges does Kruskal's algorithm pick? N minus 1. लेस देन और इक्वल टू होगा, पर हम लेस देन ही रखेंगे क्योंकि हम ऊपर एक assumption लिख देते हैं. All edge lengths are distinct. ठीक है. इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एज लेंथ डिस्टिंक्ट नहीं है तो आपका ये एल्गोरिथम ठीक नहीं है, पर हम डिस्टिंक्ट मान के हमारा प्रूफ सिंप्लीफाई हो जाता है थोड़ा. ठीक है, तो इसलिए हम इसको डिस्टिंक्ट मानेंगे अभी. द सेम प्रूफ कैन बी एक्सटेंडेड टू द नॉन डिस्टिंक्ट केस ऑल्सो, राइट. दैट विल बी अ क्वेश्चन इन द मेजर्स. So but for now we will just assume that they are distinct. Okay. The other set of edges is the set of edges that, what should be the other? So this is the edges that Kruskal's picked, right? Now suppose you have figured out what the best possible tree is. आपने सारे edges, सारे subsets of edges देख के उनका लेंथ जोड़ के जो है मिनिमम निकाल लिया. ठीक है, और आपकी edges हैं उनको हम नाम दे देते हैं F1, F2, F3. आपके में भी n-1 एजेस ही होंगी आपके सेट ऑफ एजेस में, क्योंकि किसी भी स्पैनिंग ट्री में n-1 एजेस से ज़्यादा नहीं हो सकती. एंड अगेन दिस ऑर्डरिंग इज सच दैट F1 इज लेस देन F2 विच इज लेस देन F3 एंड सो ऑन. आपकी एजेस को भी, क्योंकि आपकी भी डिस्टिंक्ट होंगी एज लेंथ सारी, आपकी से मतलब समझ रहे हैं, दिस इज द ऑप्टिमम ट्री. बाय ऑप्टिमम आई मीन the best tree, the minimum spanning tree, right? Now these two sets of edges need not be the same. What we will argue is that they are indeed the same, right? If they are the same, then what we have found out from Kruskal's algorithm is the best tree. So if these two sets of edges are not the same, so the proof is by contradiction. Suppose these sets differ and the first place they differ is I. What do you mean by that? एक हमारी एज यहाँ पे GI है, एक FI है, ये GI-1 से बड़ी होगी, ये FI-1 से बड़ी होगी. ठीक है, G1 और F1 सेम है. हम क्या करते हैं, यहाँ से लेफ्ट से शुरू हो जाते हैं और देखते हैं कि कौन सी एज जो है डिफरेंट है, कौन सी पेयर्स ऑफ एजेस डिफरेंट है. तो G1 और F1 सेम है, G2 और F2 सेम है, G3 और F3 सेम है, ये बराबर है. GI-1 FI-1 बराबर है, बट GI और FI अलग अलग है. मतलब GI कोई एज है और FI कोई एज है. अब हम आर्ग्यू करना चाहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है, अगर नहीं हो सकता तो फिर हो गया हमारा काम, राइट, बिकॉज दैट विल मीन दैट GI एंड FI आर आल्सो द सेम, राइट. एंड देन जहाँ पे भी आपका डिफर करेगा वही आर्ग्यूमेंट वहाँ पे लगा देंगे. इसका मतलब सारे के सारे सेम हो जाएंगे. सारे सेम हो गए, इसका मतलब दैट द ट्रीज आर आइडेंटिकल. So let's say this is the first place where they differ. First point of difference. This means इससे पहले तक they are all identical. So दो possibilities हैं, या तो GI FI से कम होगा या GI FI से ज़्यादा होगा. Case 1, GI let's say less than FI.
इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दो एज बराबर हैं ही, एवरी हाँ ऑल एज लेंथ्स आर डिस्टिंक्ट, तो इसलिए इक्वल नहीं हो सकते। तो जी आई एफ आई से कम है, ठीक है। जी आई अगर एफ आई से कम है तो क्या गलत है? जी माइनस में हम एफ आई ट्राई करते हैं, और अगर वो दूसरे वाले में है तो साइकिल बना रहे हैं, मतलब अगर साइकिल बना के वजह से हम रिजेक्ट करते हैं उसे, तो दूसरे वाले में भी साइकिल बना रहे हैं। जो एफ आई के बाद की एजेस हैं वो सब एफ आई से बड़ी हैं। हाँ सही बात है। तो अब जी आई लेस देन एफ आई है, तो मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ, ठीक है। तो जी आई एफ आई से कम है, और एफ आई की जो ये जो आगे की एजेस हैं ये सब एफ आई से बड़ी हैं। तो जी आई इसका मतलब यहाँ में से कोई नहीं हो सकता, या जी आई कैनॉट बी वन ऑफ दीज because it's of length strictly less than that. When I say GI less than FI, I actually mean length of GI less than length of FI, right? Just to be more particular, right? I'm not going to write it again, but that's what it really means. So if GI is less than FI, then that means the GI cannot be one of these, and it cannot be one of these either. Can it be one of these? No, because these are the same as these. And they are all distinct, so it cannot be the same as that. So मतलब GI है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। GI ऑप्टिमम ट्री में है ही नहीं, तो अब हम ऑप्टिमम ट्री में GI को ऐड कर देते हैं। So GI is less than FI, add GI to opt tree। तो क्या होगा? अगर हम एक ट्री में एक एज ऐड करते हैं तो एक साइकिल बनती है। तो अगर हमारा ये ऑप्टिमम ट्री होता, ठीक है, और हमने जी आई ऐड करा, तो एक साइकिल बनेगी, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है क्या कि ये इस साइकिल की सबसे बड़ी एज हो? अगर ये जी आई इस साइकिल की सबसे बड़ी एज है, तो फिर तो आप जो है इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे इस ट्री की लेंथ। हम क्या आर्ग्यू करना चाह रहे हैं? हम आर्ग्यू करना चाह रहे हैं कि ये ऑप्टिमम ट्री नहीं है, ठीक है। और वो हम कैसे आर्ग्यू करेंगे? कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे इस ट्री की लेंथ कम हो जाए। क्या करना चाह रहे हैं हम? जी आई को ऐड करके कहना चाह रहे हैं कि हम एक एज हटा देंगे जिससे ट्री की लेंथ कम हो जाएगी। पर अगर जी आई इसमें सबसे बड़ी एज होती इस साइकिल की, तब तो हम किसी एज को नहीं हटा सकते इस साइकिल की। तो ऐसा हो सकता है क्या कि जी आई इज द लॉन्गेस्ट एज ऑन द साइकिल? कैन जी आई बी द लॉन्गेस्ट एज on the cycle? Add GI to optimum tree, let C be the cycle formed. This cycle I am calling it C. सर अगर वो ऐसा होगा तो F1 से I minus 1 तक होना चाहिए, तब समझा पहली साइकिल। Great. So you are saying अगर ऐसा होता कि all of these edges had length less than GI, right? What are these edges? These edges are some edges from this set. देखिए ये कौन सा ट्री है हमारा? ये ऑप्टिमम ट्री है। ये जो ब्राउन एजेस हैं, they are all from this set F1 through F1 n-1, right? Now if every edge has length less than GI, then these edges have to be F1 through Fi minus 1. Yes, these edges have to be from the set F1 through Fi minus 1. नहीं आ रहा है समझ में? नहीं? जरा जोर की बोलिए। Okay, good. Then these edges have to be from the set F1 through Fi minus 1. But F1 through Fi minus 1 is identical to G1 through Gi minus 1.
ठीक है, अगर ये एज जो है आपकी F3 है और ये F5 है और ये F2 है और ये F6 है, तो ये G6 भी है, ये G2 भी है, ये G5 भी है और ये G3 भी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन एजेस में ही एक साइकिल बन रही है। इसका मतलब हमने GI ऐड ही क्यों किया होता है इन क्रुस्कल्स एल्गोरिथम? क्योंकि जब क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में भी हमने GI को ऐड करा होगा एट दिस स्टेज, तो एक साइकिल बनी होगी। तो इसका मतलब हमने क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में भी GI को नहीं ऐड किया होगा। Contradiction. Should I repeat? No? Quick repetition. GI is less than Fi. So I add GI to the optimum tree, to this tree. इस ट्री के एजेस हैं F1 थ्रू Fn-1। जब एक एज को ऐड करते हैं एक ट्री में तो एक साइकिल बनती है। मान लीजिए एक साइकिल C बनी। अब अगर इस साइकिल में कोई एज GI से बड़ी है तो हमारा काम हो गया। क्यों? क्यों काम हो गया हमारा? हम इस एज को इंक्लूड करेंगे, उस एज को हटाएंगे, उससे क्या होगा? ऑप्टिमम ट्री की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो वो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि ऑप्टिमम ट्री की कॉस्ट तो आप रिड्यूस नहीं कर सकते, ऑप्टिमम है आफ्टर ऑल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या गड़बड़ केस हो सकता है? जब सारी एजेस की लेंथ GI से कम हो, पर अगर इन सब एजेस की लेंथ GI से कम है तो ये एजेस F1 थ्रू Fi-1 में से ही होंगी, क्योंकि ये जो सारी एजेस इनकी लेंथ GI से ज्यादा है। तो अगर इस साइकिल की सारी एजेस इस पार्ट ऑफ द कलेक्शन में से है, इस सेट में से है, बट दिस सेट इज आइडेंटिकल टू दिस सेट, तो इसका मतलब ये जो साइकिल बन रही है, ये साइकिल हमारे क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में भी बनी होगी। तो हमने फिर GI को क्यों पिक किया? हाँ, ठीक है, ग्रेट। So that's why this cannot happen. Let's look at the other case. Do you want me to repeat it? Is everyone following the line of argument? There are two or three fine points there, right? But let's look at the other case. So let me once again write down this because it's useful to have this. So we are now talking of case 2, and this case is when Fi is less than GI. Right? Recall that these are identical, and now Fi is less than GI. You should have picked up Fi in case of GI. Yeah, that's what we are going to do now. ठीक है, अब सवाल ये उठता है, ये जो एज Fi है, ठीक है, ये इन सब से अलग है। इसका मतलब Fi G1 थ्रू Gi-1 से भी अलग है, या? So Fi is distinct from G1 थ्रू Gi-1। ये इन सबसे अलग है Fi एज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने Fi को क्यों नहीं पिक किया क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में? Might have been forming a cycle. Why did Kruskal not pick Fi? Ask him, huh? Why ask us? Why did Kruskal not pick Fi? It might have been forming a cycle. Because it formed a cycle. That was the only reason why we did not The pick cycle. Fi. Then optimum tree is not right. If it forms a cycle, optimum tree is not right. Right. So if it forms a cycle, it forms a cycle. So because
Fi union G1 through Gi minus 1 contains a cycle. Right? These set of edges में एक cycle बन रही है. But these set of edges is identical to Fi union F1 through Fi minus 1. तो इसका मतलब ऑप्टिमम में भी एक साइकिल है. Right? This implies the optimum tree also has a cycle. But that's not possible because it's a tree. So that's the contradiction. आ रहा है ये समझ में आपको? तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता केस. तो फिर क्या होगा? मतलब contradiction आ गया. There is no place where these two sets differ. Because we said if these two sets differ, let's look at the first place where they differ. If they differ, then let's look at the first place where they differ and apply this argument. पर हमने दोनों cases consider किए तो contradiction आ रहा है. इसका मतलब they don't differ at all. If they don't differ, then these two trees are the same. Yeah. So Kruskal's algorithm finds the best tree. Right? Now, note that there is no notion of the best tree. So, should I use the term the best tree or a best tree? सबको फर्क पता है अ और द में? So, is the minimum spanning tree unique? क्यों? अभी तो हमने आर्ग्यू किया कि ये यूनिक है. क्या हमने आर्ग्यू किया? हमने ये कहा कि ये जो है बेस्ट ट्री है. मान लीजिए आप कोई और ट्री ले लेते हैं, आप कह रहे हो ये भी बेस्ट है. मान लीजिए दो ट्रीज हैं विच आर बोथ मिनिमम स्पैनिंग ट्री. यस. तो लिसन टू मी केयरफुली. अगर हम दो मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज ले लें, अगर यूनिक नहीं है मान लीजिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो दो आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री ले लीजिए. ये भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री और ये भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री और ये वाला आर्ग्यूमेंट लगा दीजिए. तो क्या आएगा कि ये डिफर कर ही नहीं सकते, क्योंकि जहां भी ये करेंगे वहां पे आपका ये आर्ग्यूमेंट लग जाएगा. पर इसमें हमने एक एजम्पशन लिया था कि एज लेंथ्स आर डिस्टिंक्ट. सो इज द एमएसटी यूनिक? यस, if edge lengths are distinct. No otherwise. Why no otherwise? मान लीजिए ये आपका ग्राफ था, ठीक है. इसकी नॉन डिस्टिंक्ट एज लेंथ्स बना देते हैं, सबको 1 कर देते हैं. सबको 4 करना चाह रहे थे आप, क्यों? तो इसमें कितने स्पैनिंग ट्रीज हैं? जो मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज, 3 तरीके के मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं. एक ये है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, एक ये है मिनिमम स्पैनिंग ट्री और एक ये है आपका मिनिमम स्पैनिंग. सबकी लेंथ 2 है, ठीक है. वेरी सिंपल. सो इफ एज लेंथ्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, देन you can have many different minimum spanning trees. But if edge lengths are distinct, then you have a unique minimum spanning tree. ठीक है? And that follows from the proof that we've seen, that there will be a unique minimum spanning tree. ठीक है? Great. तो ये काम हो गया. तो we have proved correctness of Kruskal's algorithm. Kruskal का algorithm simple भी है और correct भी है. ठीक है. नाउ वी हैव टू फिगर आउट कि वो जो उसमें एक लाइन हमने डाल रखी थी उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. ठीक है. क्या लाइन डाल रखी थी? व्हेन आई इंक्लूड एन एज, हाउ डू आई इंश्योर
How do I ensure that no cycle is formed? Right? So basically that's the question. How do we check if a cycle is formed when an edge E, let us say an edge E u comma v is included, and we have to do this quickly. बहुत सारा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है. So when will a cycle be formed? I am trying to include this edge u v. कब एक cycle बनेगी? When you and we are already connected. When you and we are already connected. केवल तभी cycle बनेगी. Right? Cycle is formed if and only if u and v are already connected. Yes, already connected मतलब u and v are in the same connected component. Connected component or component, it's the same thing. Yeah, ठीक है, right? So what we are going to do is we are going to maintain a collection of, we are going to maintain the collection of components, right? So note that, okay, so what is happening in Kruskal's algorithm? Suppose these were my vertices. मैंने पहले स्टेप पे एक एज इंक्लूड करी. इस एज को इंक्लूड करने से पहले कितने कनेक्टेड कंपोनेंट थे? n. इस एज को इंक्लूड करने के बाद कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो गए? n-1. फिर एक और एज इंक्लूड करी, मान लीजिए वो एज ये थी, n-2. अब कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हुए? n-2. कोई और एज इंक्लूड करता तब भी n-2 होते कनेक्टेड कंपोनेंट्स, या हाँ? आप कह रहे हैं अभी इस समय n-2 हैं, ठीक है. अब अगर मैं ये एज इंक्लूड करता हूं तो n-2 ही रहे क्या, या n-3 हो गए? ये कुछ और it doesn't matter. This is, or no matter what three edges I pick, it will always have n-3 connected components. हाँ, ये प्रूव करने की जरूरत है? तो वो तो हम इंक्लूड करेंगे ही नहीं, ठीक है. तो अगर इतनी एजेस हैं हमारे पास, 3 एजेस, राइट, 3 edges which form a forest, then the number of trees in the forest. So if I have a forest containing some k edges, then how many trees are there in my forest? n-k. This you can prove very easily. It's a trivial proof really, right? Basically जब भी मैं एक edge include करता हूँ, I combine 2 connected components into 1 connected component. Right? That's the way you have to think of it. I combine 2 connected components into 1 connected component. आप कहेंगे कैसे? हमने ये वाली एज इंक्लूड करी, कौन कौन से 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स कंबाइन हो रहे हैं? एक ये वाला कनेक्टेड कंपोनेंट और एक ये कनेक्टेड कंपोनेंट, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं. पहले ये 2 अलग अलग कनेक्टेड कंपोनेंट थे, अब ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट बन गए. तो द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स रिड्यूसेस बाय 1 एवरी टाइम आई पिक एन एज. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट. सो इस तरह से हमारे एट ईच स्टेप नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स 1 से घटते जाते हैं with every edge we include, right?
So, what we are going to do is to maintain the connected components we have at this stage. How many connected components I have at this stage? 4, right. I am going to maintain them as 4 sets of vertices, right. What do I mean by that? Let me give these vertices names A, B, C, D, E, F, G, H, right. So, I am going to have 4 sets. A, B, C is one set, F, G, H is another, D is a third, and E is a fourth. These are the 4 sets that I have at this point. I am just interested in the sets of vertices. The sets of vertices in one connected component, they form one set. As you can see, these sets are all disjoint and their union is the universe. They form a partition of the vertex set, right. Yeah. Now, what is it that happens at each step? When I try to include an edge, right, मान लीजिए मैं edge BC को include करना की सोच रहा हूँ, तो what do I have to check कि B and C एक ही सेट में है कि नहीं. अब मैं सेट्स में बात करूंगा. अगर एक ही सेट में है B and C तो उस एज को फेंक दीजिए. अगर B और C अलग अलग सेट्स में हैं तो उन दोनों सेट्स को कंबाइन कर दीजिए. ठीक है, क्योंकि वो एज इंक्लूड हो जाएगी. जब वो एज इंक्लूड हो जाएगी वो दोनों सेट्स, वो दोनों कनेक्टेड कंपोनेंट्स एक कनेक्टेड कंपोनेंट बन जाएंगे. तो उन दोनों सेट्स को कंबाइन कर दीजिए. ठीक है, उससे आपका नंबर ऑफ सेट्स एक से कम हो जाएगा. सो दिस इज द डेटा स्ट्रक्चर वी हैव टू मेंटेन, right, and we are going to discuss it in more detail in the next class, right. So just keep this in mind and we will see how to do this data structure and what time does it give us for Kruskal's algorithm. So with that we are going to end today's discussion. We are going to continue the discussion on this data structure in the next class.